हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम न्यूक्लियाई चैप्टर से AIPMT 2011 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस ऑफ मास m emits a photon of frequency nu and the nucleus recoil. The recoil energy will be h square r square upon 2 mc square 0 hr mc square minus hr. This is a nucleus. Mass of nucleus is capital M. Initial momentum of system is equal to 0. न्यूक्लियस प्लस फोटोन का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम इनिशियल 0. अब दिस इज ए फोटोन, एग्जिट करता है फोटोन. एनर्जी ऑफ फोटोन is equal to h nu. H is Planck's constant, nu is frequency, E. Momentum of photon P1 is equal to E by C, h nu by C. Velocity of photon of nucleus after exit of photon is equal to V. Final momentum of nucleus is equal to mv. Final momentum of system is equal to initial momentum फोटोन का मोमेंटम है h न्यू बाई c और न्यूक्लियस का मोमेंटम एम वी इज इनिशियल मोमेंटम इज 0. तो एम वी इज इक्वल टू माइनस एच न्यू बाई सी और v इज इक्वल टू माइनस एच न्यू बाई सी कैपिटल है अपॉन सी एम. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी of nucleus is equal to h nu by mc. Energy of nucleus is equal to half, this is v, half m v square half m into h nu by mc का होल स्क्वायर. 1/2 m h square nu square by m square c square is equal to h square nu square by 2mc square. This will be the energy
This A is correct option. Next question, the power obtained in a reactor using uranium-235 disintegration is 100 kilowatt. The mass decay of uranium-235 per hour is 20 microgram, 40 microgram, 1 microgram and 10 microgram. Power obtained is equal to 1000 kilowatt or 1000 into 10 to the power 3 watt or 1 into 10 to the power 6 watt. Work obtained in 1 hour is equal to power into time. Power is 1 into 10 to the power 6 and hour is 1 hour is 3600 seconds. This comes 36 into 10 to the power 8 joule. सपोज पावर जो मास डिके है डेल्टा एम, तो डेल्टा एम दिस इज, इसको ई से डिनोट करें, डेल्टा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई. सी इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, 36 into 10 to the power 8 डिवाइड बाई सी स्क्वायर, 3 into 10 to the power 8 का स्क्वायर. 36 into 10 to the power 8 divided by 9 into 10 to the power 8 into 10 to the power 8. 10 to the power 8 से 10 to the power 8 गया 9 4. 4 into 10 to the power minus 8 kg और 4 into 10 to the power minus 8 into 10 to the power 3 gram. 4 into 10 to the power minus 5 gram or 440 into 10 to the power minus 6 gram. So this comes 40 microgram. 40 microgram will be the mass decay. This B is correct option. Next, the half-life of a radioactive isotope X is 50 years. It decays to another element Y which is stable. The two elements X and Y were found to be in ratio of 1:15 in sample of given rock. The age of the rock was estimated to be 200 years, 250 years, 100 years and 150 years. X and Y initial क्वांटिटी है x की, सपोज स्मॉल x, दिस इज 0. फाइनल है, फाइनल क्वांटिटीज दिस इज y, 1:15 की रेशो में, दिस इज 15y. हेंस x इज इक्वल टू y प्लस 15y is equal to 16y. This is 16y.
इनिशियली जो काउंट्स हैं N0 is equal to 16y and final N1 है that is y. तो N1 upon N0 is equal to half t by capital T. T is the time period and T is half life. Y by 16y is equal to 1 by 2 t by 50. y से y क्रॉस हो गया, 1 by 16 होता है 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 1 by 2 की पावर t by 50. पावर्स को अगर कंपैरिजन करें तो t by 50 इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4 इंटू 50 इज इक्वल टू 200 ईयर्स. जो एज होगी दैट विल बी 200 ईयर्स. ए इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, two radioactive nuclei P and Q in given sample decay into a stable nucleus R. At the time T0, the number of P species are 4 N0, that of Q are N0. The half-life of P for conversion to R is 1 minute, whereas that of Q is 2 minutes. Initially, there are no nuclei of R present in the sample. When number of nuclei of P and Q are equal, the number of nuclei of R present in the sample would be 3N0, 4N0, N0, 5N0 by 2 and 2N0. This is P, Q and R. Initially count 4N0, this is N0 and this is 0. Time period, half-life 1 minute, 1 minute, 2 minutes. After T time, counts are same. This is suppose N1, this is also N1 and this is to be calculated. Suppose this is value of N2. N1 is equal to 4 N1 e की पावर माइनस लैम्डा, अगर डिके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, इंटू टाइम टी. और N1 by 4N0 is equal to half T by कैपिटल T, और N1 by N1 is equal to 4 N0 1 by 2 T by 1 minute. और Q के केस में हम लें तो N1 will be N0 half T by 2.
दीज आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। 4n0 हाफ t इज इक्वल टू n0 हाफ t बाई 2। n0 से n0 क्रॉस हो गया, 4 इज इक्वल टू हाफ की पावर t बाई 2 अपॉन हाफ की पावर t। और रिवर्स कर दें हम, 1/4 इज इक्वल टू हाफ की पावर t अपॉन 1/2 t बाई 2। 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 t माइनस t बाई 2 और 1/2 की पावर t बाई 2। पावर्स का कंपैरिजन कर दें तो 2 इज इक्वल टू t बाई 2, t इज इक्वल टू 2 into 2 is equal to 4. After 4 minutes, their number of counts will be same. After 4 minutes, the remaining count of t after 4 minutes n1 is equal to 4n0 half t by t, 4n0 1/2 4/1 और 4n0 1/16 और n0 by 4। Remaining counts of Q after 4 minutes, n1 is equal to n0 half t is 4 minutes and capital T is 2. This comes to be n0 by 4. So counts of are initial count of P and Q minus final count of P and Q। इनिशियली P है 4n0, Q है n0, फाइनली P है n0 by 4 प्लस दिस इज आल्सो n0 by 4। 5n0 माइनस n0 by 2 इज इक्वल टू 9n0 by 2। जो R के काउंट होंगे दैट इज 9n0 by 2। जो n2 की वैल्यू होगी दिस इज 9n0 by 2। Hence this B is correct option।